संतों की वाणी वाणी कबीर साहिब जी की भक्ति का भक्ति पदार्थ जब मिले जब गुरु होए सहाय भक्ति पदार्थ जब मिले जब गुरु होए सहाय प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिलाए। परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. कलयुग में अगर कबीर को पहला संत कहा जाए तो कोई गलती नहीं। It won't be wrong to call Kabir Sahib the first Guru of Kalyug. कहते हैं कबीर आए 35 साल पीछे गुरु नानक आए और उनकी 10 पातशाहें थे। Kabir, about 25 years after Kabir Sahib came, Guru Nanak ji also was. कबीर आए उसके बाद 35 साल पीछे गुरु नानक आए। After about 35 years from the time that Kabir Sahib came, Nanak Sahib also came, and then there were 10 successors to Guru Nanak Sahib. तो ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब भक्ति की महिमा का बयान करते हैं कि सच्ची भक्ति तब पैदा होती है जब हमें सद्गुरु मिल जाते हैं। So this is the Bani of Kabir Sahib, and in this he talks about the greatness of devotion, and he says that devotion we get when we get the Sadguru. यही बात तुलसी साहब ने शेख तकी को कहा है। जब शेख तकी प्रश्न करता है कि परमात्मा कैसे मिल सकता है, तो उन्होंने भी यही इशारा दिया है कि हे तकी मूर्ति दे कामिल से मिल सिदक और सबोगी से तकी जो तुझे देगा पाँव तारक के पानी के लिए, तो कामिल मूर्ति के शरण में जा। विश्वास और प्रेम लेकर के भावना लेके जा और उनकी कृपा से तुम्हें वो परमात्मा के पास जाने का रास्ता और तरीका मिलेगा। This was also told to Sheikh Taki when he asked as to how one would manifest God Almighty. So he was told that you should go to a fully attained master and go with all humility and love for that master, and he will show you the path to go back to God Almighty. तो वही कबीर साहब कहते हैं कि जब सद्गुरु मिले तो भक्ति जो सच्ची भक्ति प्रकट होती है, क्योंकि गुरु जब मिलते हैं उनके दर्शन के जरिए सच्चाई का पता लगता है और हमारे अंदर मानव शरीर का रहस्य का पता चलता है और सत्संग सुन के गुरु के प्रति प्रेम और प्यार बढ़ता है। So Kabir Sahib says that you will get true devotion when you go in the company of a master, you go in the company of the Sadguru, because when you go there by his satsangs, we come to know the reality and we come to know the true purpose of our existence here, and gradually with his grace we are able to go within and do that real devotion. और हमारे अंदर जो सदियों से शंका संशय घर किए बैठे होते हैं, तो संतों के सत्संग के जरिए वो संशय दूर होते जाते हैं और धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ते जाती है। And whatever doubts we have been carrying for many previous lives and this life, and many queries that we have, all those get cleared when we go in and listen to the satsangs. तो वही कबीर साहब इशारा देते हैं प्रेम प्रीति की भक्ति पदार्थ जब मिले जब गुरु हुए साई प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग मिले। पूर्ण भाग मिला है। कहते हैं एक तो भक्ति पदार्थ सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है और दूसरा कहते हैं कि प्रेम भक्ति और पूर्ण भाग मिला है।
कहते हैं तो पिछला संस्कार अच्छा हो कि जिन्होंने पिछले जन्म में भी कुछ भक्ति करके आए हों, तो ऐसी आत्माओं पे उनका संस्कार होता है और ये गुरु का वाक्य जल्दी असर होता है और उनमें परिवर्तन आता है. So Kabir Sahib says that you will get true devotion when you go in the company of a true master. And he also says that you should have past impressions. And when you have good past impressions from your earlier lives, you are able to assimilate what the master is telling you in the satsangs and what he is explaining to you. You are able to absorb that, and that's how you are able to do better devotion. कहते हैं ऐसे ही राजस्थान में राजा पीपा हुए जो चक्रवर्ती राजा थे. एक बार आप ब्राह्मणों को बिठा के पूछा कि आप लोग सब जगह घूमते रहते हैं, कबीर साहब जैसा कोई महात्मा है? Once in Rajasthan there was King Pipa, and he once invited Brahmins, a gathering of Brahmins, and then he asked all of them that you go to so many places and religious places and other places, so is there any saint like Kabir Sahib? तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, काशी नगरी में कबीर साहब तो नहीं रहे, उनके बाद रविदास जी हैं. So one of them told him that in Kashi, that is the place where Kabir Sahib was, though Kabir Sahib is not there, but there is Ravidas who is there in that same place. हाँ, तो कहते हैं वो भी कबीर जैसे अच्छे महात्मा हैं और कहीं और तो हमें कोई नजर नहीं आया. And they told him that he also preaches like Kabir Sahib, and other than him there is at least we do not know about any other saint who is present. तो राजा पीपा ने रविदास से मिलने का मन बना लिया और एक बार घर का लोग जैसे श्रावण मास में गंगा किनारे बहुत भीड़ होती है नहाने के लिए, तो अपने घर वालों को भी स्नान के लिए 10 रथ सजा के सब सामान वामान के साथ टेंट वेंट सब लेके खाने का सामान और कुछ 10-12 मलेट्री भी साथ में लेके निकल गए. So Pipa made up his mind that he will want to go and meet Ravidas, and he was looking for an opportunity. So during the season when people take a holy dip in the Ganges, he decided that the royal family will also go there, and he decorated about 10 chariots, and he took his family along. और वो अपने परिवार को बताना नहीं चाहते थे कि मैं रविदास से मिलना जाना चाहता हूँ, क्योंकि रविदास जमाल जाते थे और ये असली राजा थे. So he took his family there. He did not tell the family that he is going to go and meet Ravidas, because Ravidas by caste was of a lower caste, and Pipa was of a higher caste. He was a Kshatriya. So he did not inform the family that he will go and meet Ravidas. तो 7-8 दिन के बाद में उनका काफिला जब गंगा के किनारे पहुंचा तो कुछ दूरी पे जगह जगह टेंट लगाए गए, राजा रानी और कुछ उनके परिवार के लिए, मंत्रियों के लिए, सैनिकों के लिए और कुछ प्रजा, सबको अलग अलग टेंट लगाए गए. तो राजा ने दूसरे दिन सवेरे बोले, आप लोग गंगा स्नान करो और मैं थोड़ा बनारस सिटी देख के आता हूँ. So accordingly, the royal family, all the nobles, and many other people also joined in, and they went to take a dip in the holy Ganges, and they set up tents on the banks of the river, and they all decided to go and take that dip. So Pipa told his family members that he will just take a tour of Varanasi, take a tour of Kashi and come.
while they continue with their taking that dip in the river. और आप घोड़े पे बैठ के दौड़ते 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 रविदास की कुटिया में पहुंच गए और रविदास जी सत्संग पूरा हो गया था, प्रसाद बांट रहे थे, तो रविदास भी लाइन में खड़े हो गए, राजा पीपा भी लाइन में खड़े हो गए और रविदास जी सबको प्रसाद देते देते मिश्री दे रहे थे। जब राजा पीपा आ गए तो उन्होंने सोचा ये राजा होके हमारे झोपड़ी में आया है, इसको कोई ऊंची दात देना चाहिए। So he saddled up his horse and he went out in search of Ravidas. And after searching for Ravidas, he finally came to Ravidas ji's place. And there the satsang had just got over and Ravidas ji was distributing prasad. He was giving raw candy to everybody. And everybody had queued up to take the prasad. So Pipa also stood in that queue. And as he reached Ravidas ji saw that this is a king who has come to me, I should give him something special. तो बाद में रविदास ने लोगों को दिखाने के लिए वहीं पे चमड़े का पानी, चमड़ा भिगा भिगा के लाल हो गया था, उन्होंने जो लोग पीछे खड़े थे उनको दिखाने के लिए वो चमड़े का पानी दिया और लेकर के राजा के हाथों में रख दिया। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि देखो नीच जात की बुद्धि नीची होती है, मुझे भी चमड़े का पानी पिला के चमार बनाने को देखा। So Ravidas ji decided to give him something special, but just to show the other people, he dipped his hands in a pail of water which had leather soaked in. Ravidas ji by profession was a cobbler, so he would soak and treat leather. So to show everyone, he dipped his hand in that water and he offered that water as prasad to Pipa. Now when Pipa bowed down to take the prasad, this thought crossed his mind that Ravidas is a cobbler and he is his thinking is such that I am such a king and I have come to him and he is trying to convert me into a cobbler. Because in those days there was this feeling of touch, and if you gave someone else this water, he would also turn into a cobbler. So Pipa felt that he is trying to convert me into a cobbler. तो उन्होंने क्या किया, पीछे की तरफ मुंह किया और उसको पिए जैसा करके अपने कुर्ते में छोड़ दिया। So Pipa also tried to show that he is taking that prasad which was being given, that water which was poured into his palm. He just turned and he let that water roll into his sleeve and he did not drink it. तो बाद में बड़े उदास मन से वहाँ से लौटे और गए, सब लोग गंगा स्नान के लिए गए थे, अभी आए भी नहीं थे घर के लोग, तो उन्होंने तुरंत धोबिया को बुलाया। तो धोबिया के घर में भी लोग गंगा स्नान के लिए गए थे, खाली 6 साल की लड़की और एक 80 साल का बुढ़ा करके राखन में थे, तो वो भागे भागे आए, राजा बुलाया। तो राजा ने वो तुरंत वो कुर्ता उतार के दिया, कपड़ा दिया कि इसको जल्दी से जल्दी शाम तक साफ करके आपको दे दे। So then with a saddened heart, Kripa left from Ravidas ji's place and he went back to the tents. And when he went back there, since that water had stained his sleeves, he quickly looked for a washerman. Now, at that time, people had even the washerman's family had gone for a dip, and there was a small girl of 6 years and an old man of 80 years. Only they were there at home, and everyone else had gone. तो बाद में वो धोबिया कुर्ता लेके गया और भट्टी लगाने लगा, वो लड़की को दिया कि दूध के लाल हो गया है,
उसको मुंह में लेके थोड़ा नरम कर, लेकिन ये सब अभी तो लगा वो टीवी देखकर बताया तो वो लाल हो गया था सूख के चमड़े का पानी, तो वो लड़की को दिया कि तू मुंह में लेके इसको थोड़ा नरम कर, लेकिन इसको अंदर ले लगना नहीं, फूक देना। तो वो लड़की मुंह में लेके उसको चबा रही, क्योंकि थोड़ा नरम हो जाएगा तो मट्टी में जल नहीं जाएगा। तो इसलिए जब वो चबा रही थी तो उसको मीठा लगने लगा लड़की, तो जैसे जैसे मीठा लगे तो अंदर वो लिलकते गई, और लिलकते गई तो उसकी रूह चढ़ाई करते गई, और वो धीरे धीरे वो सतलोक सचखंड पहुंच गई, और भी प्रेम से चूसने लगी दोनों हाथ, और उसकी रूह सतलोक सचखंड पहुंच गई थी। तो बाद में वहां से जब लौट के आए तो एक हफ्ते के बाद में धोबिया के घर के सामने वो लड़की सत्संग करने लगी। So he asked that washerman to clean those leaves which were stained by that prasad which was given by Ravidas ji. So that old man told that young girl that while I prepare the hot water for cleaning it, you suck out that stain. So usually the washermen suck out a stain and they spit it out. But she was a small girl, she did not know that, and as she started sucking out that stain, it tasted sweet, so she started swallowing it. And when she started swallowing it, the attention of the soul started going up because it was prasad from Ravidas ji. And she then started sucking more and more of that stain. And gradually her soul went up to Sachkhand. So after a week, Kripa returned back to his kingdom. And that small girl, she had, since she had gone to Sachkhand, she started doing satsangs outside her hut. अब धीरे 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 6 वर्ष की लड़की इतना अच्छा सत्संग करती है रविदास जैसा, तो धीरे धीरे बहुत भीड़ जमा होने लगी, बड़े बड़े साधु महात्मा भी आने लगे। अब 5-6 महीने के बाद में ये बनक राजा के काम में पड़े। So she started doing the satsangs, and gradually people started coming and attending her satsangs. Sadhus would come, and a lot of people would come and attend because she said such amazing things. And after about 6 months or so, this news even reached Kripa. तो बाद में कृपा ने सोचा चलो तो जमाते हैं, ये जो भी है अब इसके दरवाजे पे तो जा सकते हैं। तो उन्होंने सत्संग के 1 घंटा पहले अपना आसन कुर्सी भेज दिया, उनका आसन लगाया गया, राजा और मंत्री कुछ लोग मिल के आए, सत्संग सुना तो बड़े प्रभावित हुए, सेम रविदास जैसे ही सत्संग कर रही। तो बाद में जो है कि राजा लड़की में जैसे ही सत्संग खत्म किया तो राजा जाके उसको नमस्कार किया, दंडवत नमस्कार लेट के। तो वो लड़की ने क्या किया, राजा को दंडवत नमस्कार किया। तो राजा को गुस्सा आ गया कि तू महात्मा समझ के मैं नमस्कार करता हूँ, तू मुझे क्यों नमस्कार किया। तो लड़की कहती है कि महाराज मैं आपको राजा समझ के नहीं कर रही हूँ, मैं आप हमारे गुरु हैं, आपके जरिए चीज हमें मिली है, मैं अपना गुरु समझ के नमस्कार कर रही हूँ। So Kripa came to know also about this young girl and her satsangs, that they were. So he decided that this is she is however a washerman. She is not a cobbler by caste. So she is of a higher caste, and I can openly go and visit her. There is no problem in doing that. So he decided to go and visit her, and he sent his seat before so that he could sit and listen to her satsang. So accordingly, he and his people came and they listened to her satsang. And after the satsang, he went and bowed down prostrate in front of her. When he bowed down prostrate in front of her and got up, she also bowed down prostrate in front of him.
which annoyed him. He said, why did you bend? Why did you bow down to me? Because I have bowed down to you as because of your satsang and your the way you are enlightened. So she said, actually, I have not bowed down to you because you are a king, but I have bowed down to you because you are my master. It is because of you only that I have got this enlightenment. तो राजा पीपा को आश्चर्य होता है कि अरे मैंने कभी उपदेश भी नहीं लिया, मेरी रूह कभी अंदर नहीं गई, मैंने ये सब तुम्हें कब दिया? So Pipa was surprised because he felt that he himself is not enlightened. So how he would have enlightened her and when he would have initiated her. So he was wondering how that happened. तो बाद में वो लड़की कहते हैं कि महाराज आप वो जो होने के लिए बनारस में कुर्ता दिया था ना, वो कुर्ते से मुझे मिला, तो आपके जरिए वो आया. So then she told him that in Banaras you had given me your kurta for cleaning, and it is because of that cleaning only that I got this enlightenment. तब राजा को साग लगा, अरे अरे रविदास ने वो जो कपड़े का पानी दिया था उसने पीता कर, मैंने उसको तो पानी समझ के फेंक दिया, तो इनका सारा अहंकार शुरू हो गया. और राजा को सब बैराग आ गया, तुरंत घोड़े पे बैठे 7-8 दिन के बाद बनारस पहुंच गए. So after that, when he heard that, he was really shocked because he realized that he had thrown that water, but it was actually prasad given by Ravidas to him, and therefore he cursed him and all this caste system and everything around it, and he went back to Ravidas ji. तो जाकर के और रविदास जी के चरणों में मत्था टेक के कहते, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने जो पानी दिया था तो मैं चमड़े का पानी समझ के फेंक दिया, आप दया करो कि चमड़े का पानी दो. So he went to Ravidas ji and he bowed down to Ravidas ji and cried that you had given me that water of leather and I had thrown it. So I made a very big mistake. So please forgive me and give me that water again. तो रविदास हंस के कहते हैं कि राजन, वो चमड़े का पानी नहीं था, मैं सतलोक सचखंड जाके आपको अमृत लाके हाथ में रखा था, लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो पानी हाथ में लिया, लेकिन वो अमृत था, सतलोक से मैं लेके आके तुम्हें दिया था, तो तुमने उसे गवा दिया. अब वो जिसके भाग्य में था उसको मिल गया. So Ravidas ji said that it was not water. I had got you nectar from Sachkhand, and I gave you just to show others. I dipped my hand in that other water, but actually it was nectar from Sachkhand. So that is what I had given to you, and you wasted it. So whoever it was destined to go to, it went to her. तो कहते महाराज एक बार और दया कर दो. कहते नहीं, संतों के जीवन में ऐसी दया एक आध बार होती है, अब तो ऐसी दया नहीं हो सकती. अब आपको नाम दान देंगे और आप भजन में सुमरन करके उस स्टेज में आना पड़ेगा. So Pipa asked him for forgiveness and to shower that grace again. But then Ravidas ji said that for saints they do not shower such grace repeatedly. It happens once in a while. So now that that opportunity is lost, you can still do that by initiation. I will give you initiation and then you do your practices and go to Sachkhand. तो राजा ने कहा महाराज नामदान दे दो. उन्होंने नामदान दिया और राजा के दिल में लगी थी एक संस्कारी आत्मा थी और उन्होंने जाके राजपाट छोड़ के एकांत में भजन में रम गए और थोड़े ही बरस में उनकी रूह सतलोक सचखंड गई. और राजा पीपा की वाणी आज हमारे संत मत की वाणी में ग्रंथों में लिखी गई है. उन्होंने बहुत सारे वाणी लिखी तो कहते वो संत महात्मा हो गए. So Pipa then asked for initiation and he was given initiation by Ravidas ji. And then he renounced his kingdom and he sat and did his meditation. And
in a few years only he was able to go within and go to Sachkhand. So he became a great saint, and he has written a lot of Bani. So Pipa's Bani is contained in the Guru Granth Sahib. तो कहते हैं ऐसे अगर संस्कारी आत्माएं जो करती हैं, जब समय आता है संतों के पास जाते हैं और संत उनके अंदर जो पिछला संस्कार है उसको जागृत कर देते हैं, फिर वो पूरा टर्न हो जाते हैं दुनिया से और रात दिन भक्ति में लग जाते हैं. So like that, when the soul goes in the company of the master and it has past impressions, the masters turn those past impressions and transform that mind and soul, that jiva, and that is how that jiva then is able to do meditation and go within and do devotion. सबसे कहो पुकार के क्या पंडित क्या सेक, सबसे कहो पुकार के क्या पंडित क्या सेक, भक्ति टानी सब दे गए बहुरिन काचे बेक. तो वही कबीर साहब जी कहते हैं मैं पुकार पुकार के सबसे कह के जाता हूँ, चाहे वो पंडित हो या शेख हो, हाँ कि भक्ति जो सच्ची भक्ति है वो सुख शब्द का मार्ग है और वो मार्ग आपको संतों के जरिए ही मिलता है. जब तक कि शब्द का मार्ग आपको नहीं मिलता है तो सच्ची भक्ति नहीं कही जा सकती. So Kabir Sahib says that I say this to everybody, whether it is a pandit or a brahmin or a sheikh. I say this to everybody that you have to go in the company of the master to get that true devotion. क्योंकि पंडित लोग ये लोग क्या करते हैं, कर्मकांड करते हैं, बाहरी पूजा पाठ में लगे होते हैं, दुनिया को भी उसी में लगा देते हैं. हमने बचपन में देखा है इसका नाजायज फायदा उठाते हैं लोग. 4-4, 5-5 लोग आते थे बनारस से, वो उनका सीजन होता है, आके कहते हम कबीरपंथी हैं, हम वो सतनाम देते हैं, ऐसा ऐसा. तो हम भी देखते थे, हम बच्चे थे उस समय, सतनाम बोला तो उसमें हमें भी पता नहीं सतनाम क्या चीज है. तो वो क्या करते थे, जो हमारे यहाँ एक नियम है, जो 60 के ऊपर बुढ़े हो जाते हैं ना वो लोग गुरुमुख होते हैं. तो 2-4 बुढ़े लोग मिल गए तो वो लोग क्या करते हैं, सिद्धांत विधान कपड़ा लत्ता ला के अब गुरु से उपदेश दिया तो उनको दक्षिणा और कुछ रुपया देके इनको बेचते हैं. तो ये लोग क्या करते थे, पान रहता है ना खाने का पान, उस पे सतनाम लिख देते थे. सतनाम लिख के और देते थे, इसको खाओ आप सब लोग जाएंगे. तो कहते ये कबीर का रास्ता कितना ऊंचा है और ये लोग इसका अपने स्वार्थ के लिए पैसा कमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं. So Kabir Sahib says that I say this to all the Brahmins and all the sheikhs that the true devotion is from a true master, when you go to a true master. But this statement of Kabir Sahib is so much misused that in fact I'll relate to you when I was young and in our place, this is near Varanasi only, that there was this convention. We follow this custom that when people are old, beyond 60 years, they become gurumukhs automatically by leaving eating of any non-vegetarian food and all. So those people are considered gurumukhs. And then there was a season when these people would come, supposedly from Kabir Sahib, as disciples of Kabir Sahib. They would come and they would give naam. So at that time, I did not know what this naam is. And what they would do is they would come and they would take a betel leaf, and on the betel leaf they would write Satnam.
and then give the person to eat that bitter leaf. So once he has eaten that bitter leaf, he has got initiated. So that was how they would fool people, and then whoever becomes a guru like that, then you have to offer your homage, you have to give them clothes or some money or other things, and that's how they make a living. So this is how this great teaching of Kabir Sahib is so much misused for these kind of pecuniary purposes. तो वही कबीर साहब जी जागृत करते हैं, चाहे पंडित हो चाहे शेख हो, मैं दोनों को जागृत करता हूँ कि देश से परमात्मा भक्ति नहीं उत्पन्नती, शब्द का मार्ग मिलने से ही भक्ति आगे बढ़ती है. So Kabir Sahib says that I repeat this to all the Brahmins and the Sheikhs that by outward attire and show, one is not going to get devotion. Devotion will only be attained within by the company of a true master. देखा देखी भक्ति का कब न चरसी रंग, देखा देखी भक्ति का कब न चरसी रंग, विपत्ति पड़े ओ छाड़सी जो के चुली भुवंग. तो वही कबीर साहब जी सारा देते हैं कि एक के देखो दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा जाके नाम दान ले लेते हैं. अभी पहले क्या था कि घर में दो चार नाम लिया तो जबरदस्ती दूसरे को भी नाम दिला देते थे, जब उनको कोई इच्छा ना हो. तो संत मत के अंदर एक ख्याल रखना चाहिए कि जब तक उनकी इच्छा स्वयं नहीं होती है तो उनके नाम के लिए ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, जब तक वो खुद नाम नहीं मांगते. So Kabir Sahib says that people when they get initiated, so if one gets initiated, looking at him, other people also start taking initiation. In fact, in earlier times, when this was not so prevalent, but in earlier times, if in a family one person would get initiated or two people would get initiated, they would force the entire family to take initiation. So whether or not people would, the rest of the family members would like to take initiation or not, or they would be forced to do it. So in Sant Mat, we should all remember that this is not something by force that you can do. So if you have been initiated, you want your other family members to be initiated, you should not force upon them that they should also get initiated. It is only when they themselves feel that they should take initiation or they require initiation that they should be encouraged to do it. क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर श्रद्धा और भक्ति नहीं होती है, जबरदस्ती नाम दिला दिया जाता है, तो ये ना सत्संग में हाजिरी देते हैं, ना रोज रोज भजन सुन कर बैठते हैं, क्योंकि वो तो पहले से उनका को अंदर में वो भावना नहीं थी. तो कहते हैं कि और कभी तकलीफ आ गया, मुसीबत आ गया, तो भक्ति को ऐसे छोड़ देते हैं जो पीछुली भुवन जैसे सांप पर छोड़ देता है. एक बार छोड़ देता है फिर उसमें प्रवेश नहीं करता है. ये लोग भक्ति भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि फिर भक्ति की तरफ देखते नहीं. So, because when we force such people, they don't have that kind of sincerity in doing this, and they don't have those kind of that kind of devotion to follow it through. So they don't even attend satsangs, and they don't sit for meditation. And if there is some difficulty that they face in life, then they leave this path like a snake sheds off its skin. So when the snake sheds off its skin, it never goes back into that skin. So like that, they shed off their this devotion and this path, and they never come back on this path. तो इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं हमें कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. जब उसके अंदर स्वयं भावना पैदा होती है कि हमें नाम लेना चाहिए, तभी वो नाम लेने से उसका फायदा है, और जबरदस्ती दिलाने से उसका फायदा नहीं होता है कुछ.
So therefore we should never force someone to take initiation. Only when that person feels of his own will that he needs to take initiation, that we should encourage him. Because there is no benefit otherwise if he is forced to take initiation. क्योंकि जब तक हमें अपने सद्गुरु के चरणों में प्रेम प्यार पैदा नहीं होता है, हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती और तो कोई फायदा नहीं नाम लेके. So till we have that love and affection towards our master, we will not be able to progress on this path, and there is no point in being forced on this. तो कहते हैं वो प्रेम प्यार का पैदा होगा जब हम रोज रोज सत्संग सुनेंगे और रोज रोज भजन सुमरन बैठेंगे, तो वही एक रास्ता है जिससे हमारे अंदर गुरु का प्रेम और प्यार पैदा होगा, हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी. So the only way to develop that love and affection and that devotion on this path for your master and Naam is by doing your bhajan simran every day and by listening to satsang every day. Only then we will continue to get that motivation and that love will develop within us. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि देखा देखी भगत को कभी नहीं चढ़ती रंग. कहते हैं जो एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा आके नामदान लेके जाते हैं, ऐसे लोग को नाम का रंग चढ़ता है. So therefore Kabir Sahib says that when one sees the other getting initiated and he goes for initiation, and likewise the third person goes seeing the second person taking initiation, then such people, just because they see the other one doing something, they have followed this path. All such people will never be able to get and assimilate those colors of love and devotion on this path. टूटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, टूटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायादारी मस्करे के तई गए ऊत. तो कबीर साहब जी कहते हैं तोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत. कहते हैं जो गरीबी में, मुसीबत में, तकलीफ में भक्ति से जुड़ा, एक ही भावना भक्ति से जुड़ा रहता है, वही संतों को प्यारा होता है, वही सुपुत्र माने संतों को प्यारा होता है. So only that disciple who in all, with whatever difficulty he faces, whatever difficulty he is going through in life, maintains his love and affection on this path and continuously is on his bhajan simran and meditation. Only such disciple is loved by the master. The master loves this disciple who stays steadfast on the path despite all the difficulty that they face. तो कहते हैं तो क्या होता है, जो भी दुनिया के सुख दुख हैं ये हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं. अब संत इसमें हाथ नहीं डालते हैं. ये जो भी जीव कर्म किया है अच्छा या बुरा, उसका हिसाब उसको ही देना पड़ता है. हाँ, संत तो नामदान के दिन आपके कुछ बड़े बड़े कर्म खत्म कर दिए, बात अलग है, लेकिन आप चाहोगे छोटे मोटे में भी गुरु हमारी मदद करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये काल के कानून के खिलाफ है और काम नहीं चाहता है. वो तो यही चाहता है कि जो जीव ने कर्म किया है उसका हिसाब वही चुकाता है. So whatever we are going through in our life, whatever difficulties we are facing, all that is a result of our own karmas, our own deeds in our previous lives, and we have to go through these. Normally, the saints don't interfere in these karmas, and yes, of course, the bigger karmas that we have, the bigger burden of karmas that the disciple has, they are assumed by the master at the time of initiation, and that burden is definitely reduced. But usually these karmas which we are suffering or enjoying in this life, those are not interfered by the masters, because Kal, it is like defying Kal, and Kal requires that the soul which has
and the jiva which has incurred those karmas and deeds should himself redeem that deed, and nobody else should interfere. So it is like defined. So it is like defined providence, it is like define the natural laws. So saints do not interfere in this. हाँ, ऐसे लोगों को मालिक दया करता है, शब्द दया करता है, जो रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाते हैं और रात दिन सदगुरु के चरणों में सौ लगाए बैठे रहते हैं, दुनिया कारोबार करते हैं, लेकिन जुड़े गुरु से और 2.5-3 घंटे रोज बैठ भजन करते हैं, तो वो गुरु की याद में रहते हैं। तो ऐसे लोगों का हो सकता है कि कुछ मदद कर्मों को दूर करने में मिल जाती है, लेकिन बगैर भक्ति के और बगैर कोई जो है कि किए हुए हम पर पेमेंट मांगते हैं तो पेमेंट नहीं मिलता है। So, if of course we are doing 2.5 hours of meditation or 3 hours of meditation daily, and we are focused on our Sadguru, and we are going about all our worldly duties, looking at those as duties, and inside we are connected with the Master, then of course the Master showers His grace on that jiva. But otherwise, if we are not doing any devotion and we are simply expecting the Master to take care of our problems, then without any service, you are not going to get payment. तो ऐसे ही होता है कि हम काम तो कुछ करते नहीं, पगार चाहते हैं कि भाई गुरु दया करे, थोड़ा भी कोई बीमार हो गया तो कहते हैं गुरु दया करे, ऐसे ऐसे फोन आते हैं, तो हम कहते भाई गुरु नहीं, डॉक्टर दया करेगा, हॉस्पिटल जाओ, तो कहते नहीं, आप तो परमात्मा है, आप दया करो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो बताओ जिन्होंने गुरु को कुछ समझा ही नहीं है। So it's like without working, one is asking for a salary. He is not going to get paid. So there are such people, such disciples. If they get a small fever, they immediately call and ask for being relieved from that fever. So that relief is not going to be given by the Master. It can be given by a doctor. So he should go to the doctor instead of going to the Master. But then such people, they ask for all these things, which is not correct. देखा देखी पकड़ सी गई चिनक में चूट, देखा देखी पकड़ सी गई चिनक में चूट, कोई बिरला जन बाहुरे सतगुरु स्वामी मूठ। तो कहते हैं कि देखा देखी जिन्होंने भक्ति को पकड़ा, वो भक्ति कायम नहीं रही, कई तकलीफ मुसीबत और कोई ऐसी घड़ी आ गई कि उनको गुरु के प्रति अभाव आ गया और भक्ति छोड़ गए। ऐसे हमने काफी लोगों को देखा है। So Kabir Sahib says that those people who look at others and do outwardly devotion, that kind of devotion doesn't stay, because at the slightest difficulty, that person stops doing that devotion. So I have seen so many people like this. तो एक कर्नाटक का प्रेमी था, तो उसने महाराज अजय सिंह से नाम लिया। अब अजय सिंह से नाम लेकर के और महाराज से मैंने उसको कर्नाटक में सत्संग करने का भी हुक्म दिलाया था। तो वो सत्संग क्या करेगा, लेकिन ऐसा इधर किताब लेके कुछ बोलता था। तो बाद में क्या हो गया, धीरे धीरे वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, तो मंत्र तंत्र में चला गया। नींबू मंत्र पढ़ के देना, तुम्हारे को कोई कुछ कर दिया, कोई कुछ कर, वो कमाने लगा उसमें झूठ बोल के।
तो बाद में गया यहाँ सेठ डालने का था उसके उस जगह पे, अब वो पैसा चाहिए तो गुरुविंदर सिंह महाराज जी के पास जाके नाम दे दिया, उधर जाके नाम दे दिया। तो वो किया तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सेठ बांध के दिया कि ये अपने नाम पे करो आश्रम के जगह और उस वहां सेठ बांधे। तो ऐसा करके सेठ बांध दिया और अभी भी सत्संग चलता है, लेकिन वो आदमी का दिल जो है साफ नहीं, वो मंत्र तत्व छोड़ा ही नहीं लास्ट में। मैं बोला देखो तुमने नाम लिया है और नाम वाले को ये मंत्र तत्व शोभा नहीं देता है, आप सुमरन करो, लेकिन वो मंत्र तत्व छोड़ा, उसको पैसा आता था और वो इतना तकलीफ भोग के मरा कि उसके पीछे चमड़े फटके खराब खून आने लगे जिसमें से दुर्गंध आ गई और बड़ा विचित्र तरह से उसका ये हुआ। तो कहने का मतलब कि अच्छा नहीं है इस तरह से। तो कहते हैं जब कभी तकलीफें आती हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हम तुरंत भक्ति से दूर हो जाते हैं। भाई अगर एक संत से आपने नाम लिया है, दूसरों संत के पास फिर जाके नाम लेते हैं, तो क्या होता है, जवाबदारी तो वही रह जाती है, जिन्होंने पहले नामदान दिया लेखा वही रह जाता है। या तो तुम झूठ बोल के जाके नाम लेते हो कि हमें नाम नहीं मिला है, तब वो नाम देते, नहीं तो नहीं देते। वो भी पूछते हैं जिनको नाम मिला है वो इधर नहीं आते, लेकिन झूठ बोल के लेते हैं, और झूठ बोल के लेने से उनकी कोई गलती नहीं, तो रिटर्न होता है खाली। लेकिन आपका हिसाब किताब यहीं पड़ा रहता है, अब इनके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है। अब हम किसका ध्यान करें, इनका ध्यान करें या उनका ध्यान करें? अब इस द्वेष में वो किधर के भी नहीं होते। So there was this disciple in Karnataka. I had taken him, and he was an initiator of Sant-Ajaib-Kripa. And in fact, with the request to Sant-Ajaib-Kripa, even he used to do local satsang. So he used to read some book and explain, and have some people to whom he would read out those satsangs. So that went on, but then when he faced a little difficulty, he stopped doing this. He stopped going to Sanji, and in fact he went and started doing all these mantras and tantras, all these Vedic practices he was doing by putting some lemon and doing these mantras. That way he was earning some money. Later he wanted to also set up a shed and for that shed he wanted money. So he went to Ramsinghji Maharaj and he took initiation because he was getting money for setting up that shed. He did not tell them that he was already initiated. So they agreed that if he transferred the land in their name, they would spend the money and set up the shed. So that shed is there and satsang does go on there. But he misused all this and he drifted from the path. He went into doing all these mantras and all, and later he had a very, very difficult death. At the time of death, he got into a very difficult kind of illness, where his back, the skin was tearing on his back, and it was swelling, it would stink. And like that, with a great deal of suffering, he died. So like that, people come looking at others and then they leave that path on the slightest difficulty. Also, in satsang, in Sanpat, when you have been initiated by one guru, there is no need for you to go to another guru for initiation. But and normally the other guru also doesn't give you initiation if you are already initiated, because your account stays with the first Sadguru who has initiated you. So here in this case also he misinformed, and therefore probably they agreed to initiate him and give him the money for the shed. But otherwise they would also not have given him initiation. Now the problem is that
In the second initiation, it is just a repetition. So you know the Naam and you just repeat it. But the account is still with the earlier Sadguru who has given you initiation. Now, that creates a problem for the initiate, because when he now sits for meditation, he doesn't know on whose form to contemplate, whether to contemplate on the first Guru or whether to contemplate on the second Guru. So that creates a confusion and doubt in his mind, and they are not able to do that kind of focus and devotion. और हम तो यही कहेंगे कि अगर आपने कहीं भूल से नाम भी ले लिया हो तो आप उसी का ध्यान करें जिन्होंने पहले नाम दान दिया है, क्योंकि आपका रेखा उन्हीं के पास होता है. So I say that even if by mistake you have taken initiation and some Sadguru has initiated you, then you should continue contemplating on the form of that master, because your account is with that master. जिन्होंने पहले नाम दान दिया, whoever has given you the first initiation. ज्ञान संपूर्ण विदाई हृदय नाही जुड़ाए, ज्ञान संपूर्ण विदाई हृदय नाही जुड़ाए, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए. जो कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर भक्ति का ज्ञान नाम कभी प्रकट नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर गुरु के प्रति प्रेम और प्यार नहीं होता है, देखा देखी लिए होते हैं. जो गुरु का प्रेम प्यार नहीं होने से उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है. जो कहते हैं ऐसी भक्ति टिकती नहीं है, तो समय पे धोखा दे देती है. So Kabir Sahib says that such people who just by seeing others have got initiation, they will not be able to manifest that sound current within. They will not be able to do that kind of devotion. And with time and with some difficulty that they face, they will be walking away from this path. इसीलिए भक्ति अपने अंदर पैदा होनी चाहिए कि हम इसी जन्म में मुक्त होना है और गुरु का हुक्म पालन करें, 2-2.5 घंटे रोज सुमरन करें, तो जरूर सफलता हासिल हो. So that thought has to come from within, that feeling, that love and affection has to come from within, that we want salvation and in this life we are going to strive for that salvation and do that devotion. Only then we will be able to get success on that devotion. क्योंकि महात्मा मना नहीं करते भाई आप कुटुंब परिवार में रहो, अपनी गृहस्थी को आप जैसे चल रहा है चलाओ, लेकिन सवेरे उठ के 2 घंटा भजन सुमरन में रहो. So masters say that you stay in your own families, you stay in the comfort of your families. They are not asking you to leave your families. You should sit within that, but do your meditation. Spend 2.5 hours every day and do your meditation. क्योंकि ये बाहरी रिश्ता 4 दिन का है, ये हमारे कर्मों और शरीर से है, ये आत्मा से संबंध नहीं है. आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से आत्मा का है, और वहाँ जाने के लिए गुरु की जरूरत है. Because all these relationships that we have outside are all only bound with our bodies. They are not bound with our soul. And the only relation that you have with the soul is with the Sadguru and God Almighty. And this is the path, this is the only path that will take you back to your true Father, to God Almighty. क्योंकि यहाँ जो भी सामान हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार मिल रहे हैं, ये काल और माया के हैं, हमारे नहीं हैं. हम तो खाली हाथ आए हैं और लास्ट में खाली हाथ जाएंगे. हम देखते हैं हमारे कितने लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या लेके गए. Whatever we are getting here, whatever wealth we have or whatever other things that we possess, they do not belong to us. They belong to Kal and Maya. And we have come here in this world empty-handed. And when we leave also, we will be leaving empty-handed. We have seen so many family members leaving us, when we have seen that they have not taken anything with them. Like that, we will also be leaving everything behind and going empty-handed. इसीलिए सच्चाई को समझें. ये दुनिया और
that we see here and what we have is only for but a few days, and when we leave this body, we will have to shed all this behind. And all the effort that we have made for amassing all these material things, we'll have to leave behind. So do that work which stays with you even beyond death, and which takes you back to your God Almighty, which helps you to get back there. And that is given to you by your true master, by your Sadguru. तो कहते हैं गुरु यहाँ भी हमारे साथ होता है। अगर हम भजन सुमरन करके देखते हैं, हर जगह पे वो हमें मदद देता है, दुनिया में भी, और यहाँ पे भी साथ निभाता है। मरते समय अंदर आके दर्शन देके ऊपर के मंडल में ले जाता है, और वहाँ भी अब हम अपने साथ ही रहता है। जैसे हम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, गुरु भी ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में साथ निभाता है। सतलोक सत्संग तक वो हमारा पल्ला नहीं छोड़ता है। So there is only one Guru who takes care of you. If you are meditating, you will see that in your worldly life also, he is helping you so much. And at the time of death also, he comes to take the soul. And then at each plane, with each form that we have, he will also assume that form, and he will also handhold that soul till he takes the soul back to God Almighty and reach the soul to its true home. इसीलिए हम उनसे प्रेम प्यार करें जो अपना है, जो अपने बारे में सोचता है, जो यहाँ और मरने के बाद वहाँ साथ निभाता है। So therefore we should spend time with someone who really cares for us and who is with us in this life also, and who is with us even later beyond death, to take us to our true home. प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उदर बरन के कारणे जन्म गवायो सार। तो वही कहते हैं कबीर साहब जी, प्रेम के बगैर जो भक्ति है वो माने वृथा है। लोग अपने पेट पालन के लिए और परिवार पालन के लिए झूठ बोलते हैं, जगह जगह भिक्षा मांग के बैंक बैलेंस करते हैं, ये सब कर्म बढ़ाते हैं। So all these outward devotion and all these outward practices people are doing, they are only doing this for their livelihood, and they are just increasing their karmas by doing this kind of practices. करते हैं किस तरह से अपने कर्म को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मांगना वो क्या होता है, कर्जा ही होता है। चाहे एक रुपया मांगो, चाहे 1 लाख मांगो, जो मांगा हुआ है वो कर्जा ही होता है। ये जन्म नहीं तो आगे जन्म, आगे जन्म नहीं तो और आगे जन्म, उसको चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए संत मत में मांगना बुरा है। When we ask for help or we ask for anything from others, it is like a debt that we assume, and whether you redeem that debt by repaying it in this life or carry it forward in the next life or the life after that, we will have to redeem it. So whatever we are asking and taking, whether it is 1 rupee or 100 rupees or more, whatever it is, it has to be paid back. Therefore in Satwan, this asking or taking for free is prohibited. और कुछ लोग सोचते हैं हम ब्राह्मण हैं, मांगना धर्म है, लेकिन किसी भी मानव शरीरधारी को मांगना धर्म नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने ये जात पात तो हम लोगों ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं बनाया है। परमात्मा ने 2 ही जात बनाया है जो किसी से नहीं बदल सकता, एक स्त्री और एक पुरुष। बाकी जात पात तो सब बीच में पैदा हुए हैं। Brahmins feel that when they have a right to ask, and they feel that as Brahmins they have that right. But there is this
concept of Brahmin, this caste of Brahmin, is all made by humans only. It is made by man. It is not made by God Almighty. God Almighty has only made two castes, the male and the female. And other than that, there is no other caste that has been created by God Almighty. जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ के जाती है तो धर्मराज के दरबार में ये नहीं पूछते हैं कि आप ब्राह्मण क्षत्रिय, वहाँ तो ये पूछते हैं कि ऐसा सुंदर मानव शरीर मिला तो आपने क्या किया, भला या बुरा. So when after death we go to the Lord of Judgment, the Lord of Judgment does not ask you your caste. He does not ask you whether you are a Brahmin or a Shudra. What is asked is that you have been given this wonderful human life, and what have you done of it? What are the good deeds that you have done, and what are the bad deeds that you have done? Only an account of that is kept. आत्मा कर्मों का गठन लेके जाती है. हमारी जात पात जल के दो मुट्ठी राख बन जाती है और वहाँ आत्मा जाके अपना हिसाब बताती है. So the soul carries that burden of the deeds that have been incurred in this life, and it goes to that Lord of Judgment. And whatever caste and other things that are there, those get reduced to 2 handfuls of ash and end with the body. इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बने स्वर्ग का होई. कहते उस परमात्मा के दरबार में कोई जात पात नहीं पूछता है. वहाँ जो परमात्मा की भक्ति करता है वो परमात्मा को प्यारा होता है. So God Almighty also does not ask what is your caste, and only those who have devotion for Him, who have love for Him, only they are permitted entry in that in His realm. इसीलिए कहते हैं कि प्रेम के बगैर जो हमारी भक्ति है वो खोटी भक्ति है. दिखाव से परमात्मा नहीं मिलता है, अपना ही नुकसान होता है. जब तक कि सच्ची प्रेम प्यार हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम प्यार पैदा नहीं होता तो सच्ची भक्ति का सवाल पैदा नहीं होता. So therefore all these outwardly devotions and practices will be of no consequence unless we have that true love and affection within us, and that leads us to the devotion of a true master. प्रेम बिना जो